Assalamualaikum students, today we have to discuss some important terms related to thermal properties of matter. So in this unit we have to study about the thermal properties of matter especially. This chapter is related to the 9th level federal board or KPK board, chapter number 8, 9th level physics. So let's start. First of all, we have to start with the introduction of thermal properties of matter. Let's see. The study of heat transformation into other forms of energy is called thermodynamics. It means that the movement of heat, the transformation of heat, the traveling of heat from one place to another, or energy. So this is known as thermodynamics, which is the branch of physics. Begins with the 18th century engineers who built the first steam engine. In the 18th century, the first steam engine was built. These steam engines were used to power train, factories, and water pumps of coils, mines, and thus they contribute greatly in the industrial revolution. Through the study of the thermodynamics begins in the 18th century, it was not until around 19 the concept of the thermodynamics was linked in the motion of the atoms, molecules of solid, liquid, and gas. Today, the concept of the thermodynamics are widely used in the various applications. That involves heat and temperature. Engineers use the law of thermodynamics in continually develop higher performance refrigerators, automobiles engines, aircraft engineers, and numerous after other machines. So this is a description related to temperature. Now I want to explain something in Urdu, especially यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी के ट्रांसफ़र के हवाले से कि एक एनर्जी यानी हीट जो हरारत के नाम से हम जानते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्म होती है, तो उस फिज़िक्स के ब्रांच को हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। 18th सेंचुरी में सबसे पहले जब हीट इंजन, स्टीम का इंजन यानी कि भाप से चलने वाला इंजन बनाया गया, तो जब से इस थर्मोडायनेमिक्स की इब्तिदा हुई, उसके बाद ट्रेन, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में तमाम तर कोयले से होने वाली माइंस में तमाम तर वर्क और कारखानों की रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ, यानी कारखानों के दौर की इब्तिदा हुई। आल्सो द स्टडी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स बिगेन इन द 18th सेंचुरी, लेकिन उसके बाद जो है 18वीं सदी में इसका की इब्तिदा हुई इस थर्मोडायनेमिक्स की, और 19वीं सेंचुरी में कंसेप्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हद तक पहुंच गया, और उसके बाद सॉलिड, लिक्विड और गैस में इसके कंसेप्ट डिस्कस होने लगे। लेकिन आज जो थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है वो बहुत ही चीज़ों में इन्वॉल्व है, जैसे कि इंजन्स और उसके साथ मुख्तलिफ लॉज, जिस हमारे पास ऑटोमोबाइल्स, ये गाड़ियाँ चल रही हैं, तो रेफ्रिजरेटर्स वर्क कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स, हवाई जहाज़ वगैरह हैं, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मशीनें जो भी वर्क कर रही हैं, चाहे पेट्रोल के ज़रिए चाहे किसी भी तवानाई के ज़रिए, तो उसमें जो ताल्लुक़ है वो थर्मोडायनेमिक्स का है। अब आते हैं हम टेम्परेचर की तरफ। नाउ इन इंग्लिश, टेम्परेचर इज़ अ कंसेप्ट वी ऑल अंडरस्टैंड फ्रॉम एक्सपीरियंस, इवन एज ए स्मॉल children we learn in the perceive hotness and coldness of objects. It is a concept of hotness and coldness. Simply, we hear weather forecasters tells us that the temperature will be 32 degrees centigrade or 32 degrees Celsius. Today, we hear doctors tells us that the temperature of the body is 98.6 Fahrenheit. We know that the general science for class 8 and 9 source of the effects of the heat in energy, that temperature is defined as the measurement of the degree of hotness and coldness of the body. It means that the degree of hotness and coldness of the body respect to their some standards. So it is the main concept related to thermodynamics. Now we move to the next paragraph. Temperature is the measurement in Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. So these are the three units used for measuring temperature: Kelvin, Fahrenheit, and Celsius. Here we would extend our understanding of the temperature on the basis of the kinetic molecular description. What means by the kinetic molecular description? According to this, the theory, atoms and the molecules are in the continuous random motions. According to this theory, temperature can also be
defined as the average kinetic energy of molecules of a body. So the kinetic energy related to a molecule is known as the energy of that molecules, and that energy which is through which the particle is capable to move, that is known as kinetic energy. Now we discuss in this paragraph internal energy and temperature. Internal energy is the sum of the kinetic energy and potential energy associated to the motion of the atom in the of the substance. The substance having materials, particles, molecules which have both energies, kinetic and potential. So the sum of the kinetic and potential energy is known as the internal energy, total internal energy of the molecule. For example, in a gas made up of single atoms, monoatomic gas, such helium, the atoms move around randomly, colliding with each other with the walls of the container. So each atom has the same translational kinetic energy. However, if the gas made of the molecules with two or more atoms, the molecules can also stretch, contract, or spin. So these molecules have also have other types of kinetic energy called vibrating rotational kinetic energy. Now I want to explain something in Urdu. So comes back to the topic in this. असल में जो टेम्परेचर की डेफिनेशन है वो ये है, कुछ डिग्री और हॉटनेस और कोल्डनेस, किस चीज़ के अंदर कितनी मिकदार में कोई गर्माइश या ठंडक पाई जाती है, उसे हम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर के 3 स्केल्स यूज़ होते हैं, 3 स्केलिंग में 3 यूनिट्स हैं, सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का और केल्विन का, और इसका ताल्लुक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से है। अंदर मौजूद हर की तरवानाई जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अच्छा, और इसका ताल्लुक किसी भी मॉलिक्यूल के एवरेज यानी कि उसके अंदर औसतन कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी हर की तवानाई है, उसके से मुतल्लिक है। अब इंटरनल एनर्जी की अगर बात करें, किसी भी मॉलिक्यूल्स के या एटम के अंदर की इंटरनल जो अंदरूनी एनर्जी होगी किसी भी पार्टिकल की, तो वो डिपेंड करेगी 2 चीज़ों के सम पर, एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम पर। और इस तरह से हमने एक मिसाल लेते हैं कि अगर एक सिलेंडर के अंदर कोई गैस है, हीलियम गैस है या कोई भी गैस है, तो उसके ये मॉलिक्यूल्स के पास कोई एनर्जी है जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो है एक वाइब्रेट कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, और कंटेनर के अंदर हैं तो कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं, तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से उनके पास आई, तो एक पोटेंशियल लेवल, एक पोटेंशियल होने की वजह से आई। इस वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी पाई जा रही है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, खिंच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और स्पिन हो रहे हैं। सो ये 3 एनर्जीज अगर हैं तो उसकी वजह से वाइब्रेशनल मोशनल और जो है मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से या काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। गैसेस की बात करें तो इसी तरीके से लिक्विड में भी ऐसा ही होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है लेकिन गैसेस के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, और गैसेस के सॉलिड के पास वो एनर्जी होती है लेकिन लिक्विड के मुकाबले में भी मज़ीद कम होती है। तो ये कुछ डिफरेंस आ रहा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से। सो आई विल डिस्कस मोर थिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।